Hello everyone. So today we'll be discussing what's the meaning of 100% on-chain for NFTs or Dapp. Like there are a few of the blockchain apps which claim to be 100% on-chain but use centralized services, for example AWS services. तो आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. What are those? So पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि इस प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज 100% ऑन चेन, द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग 100% ऑन चेन एंड द डेटा कॉस्ट एंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गोइंग totally on chain for NFTs and DApps on IC. So पहले definition पढ़ लेते हैं what is 100% on chain. So in simple terms, it means that all data and transaction that happens on a particular NFT or a DApp that are stored on blockchain. This eliminates the need for a centralized authority. The term on-chain emphasizes the decentralized nature of this asset, indicating that it doesn't rely on any external services जैसे कि AWS या फिर गूगल क्लाउड या फिर आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव फॉर एग्जांपल. ये सब किसी चीज़ में रिलाई नहीं करती है. सो So some of the myths जो other blockchains claim करते हैं that are claimed to be true, but they utilize centralized services. For example, number one is decentralization. Being 100% on chain ensures a higher level of decentralization. जो भी आप एप्लीकेशन, जो भी एसेट आप ब्लॉकचेन नेटवर्क में डाल रहे हैं, जहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन्स, सारा डेटा स्टोरेज और जो भी एग्जीक्यूशंस होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, वहाँ पे they are handled by a distributed network of nodes if it's 100% on chain. जो nodes है, they act as a decentralized nodes distributed on various parts of ecosystem और उनसे हैंडल होता है. ये डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर उस नीड को रिमूव कर देती है that we need to rely on a single authority or a single server. So that's one benefit. सेकेंडली नो सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है. ऑब्वियसली अगर आप किसी सेंट्रल अथॉरिटी या सर्वर में रिलाई नहीं करेंगे तो आपको कोई सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा. काफ़ी सारे ब्लॉकचेन्स हैं जो सेंट्रलाइज सर्विसेज यूज़ करते हैं फॉर सम माइनर टास्क्स, फॉर नॉन एसेंशियल टास्क्स, लाइक होस्टिंग अ वेबसाइट्स और स्टोरिंग सम ऑक्सिलरी डाटा लाइक कैशेस फॉर एग्जांपल. सो 100% ऑन चेन इम्प्लीमेंटेशन इनको भी अवॉइड करती है ऑन सच सर्विसेज फॉर क्रिटिकल ऑपरेशंस, ताकि बेटर ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी हासिल हो. So the third is data cost on internet computer blockchain. So it's the IC blockchain is designed to offer efficient and cost effective data storage, right? So by utilizing अगर हम इस its own blockchain infrastructure, IC blockchain का the cost काफ़ी लो हो जाती है. एंड जो स्टोरिंग और एक्सेसिंग डेटा फैसिलिटीज है विद इन ऑन चेन एसेट्स और जो भी एप्लीकेशंस है वो काफ़ी आसान हो जाता है. द सिक्योरिटी इंक्रीजेस, द ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेस एंड द डेटा कॉस्ट डिक्रीजेस. सो थिंग इज कि काफ़ी सारे ब्लॉकचेन अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं दिस 100% ऑन चेन इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज और गूगल क्लाउड जैसे AWS दे आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश सर्वर्स, राइट? सो उनको एक आसान तरीका दिख जाता है कि इस छोटी मोटी एप्लीकेशंस के लिए क्यों ना हम यही यूज़ कर लेते हैं और बाकी मेजोरिटी ऑफ वर्क हम ब्लॉकचेन में करेंगे. सो 100% ऑन चेन अवॉइड्स दैट ताकि ज़्यादा बेनिफिट हो. And obviously the fourth is increased transparency and security जो कि मेन टास्क तो है ही है कि अगर हम कहीं होस्ट ही नहीं कर रहे किसी सेंट्रलाइज सर्विस में, किसी में रिलाई नहीं कर रहे हैं, वी आर कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, तो आपका ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाता है जो ऑल ओवर एक अल्टीमेट गोल है ब्लॉकचेन का जो प्रोवाइड करती है वो. सो दिस डिसेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ ब्लॉकचेन डिक्रीजेस दो सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर्स. जैसे कि कभी AWS क्रैश हो गया तो पूरा एप्लीकेशन क्रैश होने के बजाय ऐसा पॉसिबल नहीं है ब्लॉकचेन में. या सिंगल नोड सर्वर कभी क्रैश हो गया तो एप्लीकेशन डजंट क्रैश बिकॉज बाकी नोड्स काम कर रहे हैं. सो सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर को अवॉइड करते हैं, thereby you reducing the risk of hacking or data breaches.
So the IC blockchain is decentralized networks that offers this unique combination of performance and scalability and security. Its architecture is designed to handle large-scale applications, DFs and like DApps and NFTs, and make it perfect fit for 100% on-chain solutions. So भी जो भी IC apps है, इंटरनेट कंप्यूटर के जो भी applications है, जो भी NFTs है, जो भी DApps है, they are 100% fit for this on-chain solutions. It's not like they are not. Sometimes they just look for the easier way for this centralized method, which are this AWS and cloud stuff. So वो आसान तरीका दिखता है, पर फ्यूचर में जाके this is going to be the ultimate solution. सो इसके काफ़ी सारे यूज़ केसेस हैं. फॉर एग्जांपल सब सारे केसेस में, जैसे कि डिजिटल आर्ट, गेमिंग, चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका डेटा ब्रीचेस हम लोग सुनते आ रहे हैं, जो कि फेसबुक में हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट में हो. हमने सुना था कि आधार के जो भी काफ़ी लीक हुए हैं एक बार, तो वो सब चीज़ काफ़ी कम हो जाते हैं. सो दे प्रोवाइड द ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. सो या. So, in conclusion, it's essential to critically evaluate claims of being 100% on-chain, right? Made by different blockchain platforms. Some blockchain offer करते हैं certain on-chain features, but they also rely on centralized services for some of those small tasks जो मैंने आपको बताया था, like hosting a website, for example. So, ये centralized services या फिर infrastructure को avoid करने के लिए this we have to proceed with this blockchain, and to ensure to determine if blockchain is genuinely 100% on chain, it's important to consider factors such as उसका core functionalities क्या है, उसका data storage कहाँ और कैसे हो रहा है, उसका environment क्या है, and overall architecture क्या है, जो जिसके basis में उस platform में वो application design किया गया है. सो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हम लोग देख सकते हैं बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन कि दिस सर्विस ऑफर्स एग्जैक्टली 100% ऑन चेन या फिर जेन्युइनली है या नहीं, ये सेंट्रलाइज सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं या नहीं. सो या, थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय.